हेलो टू ऑल। आज हम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का फोर्थ टॉपिक करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज स्टाइकोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट। दोनों टॉपिक हम वन बाय वन डील करेंगे। बोथ द टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर स्कूल एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट टू योर ऑब्जेक्टिव्स। जेईई मेंस, नीट, एम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इनकी अंडरस्टैंडिंग हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अबाउट मोल कंसेप्ट पढ़ा था, हम वहीं से करेंगे। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड टू द फर्स्ट टॉपिक दैट इज द स्टाइकोमेट्री। सी व्हाट यू नो ऑल अबाउट स्टाइकोमेट्री। स्टाइकोमेट्री का मतलब क्या है? बेसिकली स्टाइको मींस एलिमेंट एंड मेट्री मींस मेजरिंग द एलिमेंट्स। वी हैव टू मेजर, सो दैट इज ऑल अबाउट स्टाइकोमेट्री। तो इस स्टाइकोमेट्री की प्रॉब्लम्स को करने के लिए आपको मैं एक सिंपल सा रूल बताऊंगा। एक रूल नहीं, आई विल टेल यू अबाउट द 3 रूल्स व्हाट यू हैव टू फॉलो एंड अराउंड 100% questions will be solved from you. So only 3 basic rules you have to remember while solving the problems of stoichiometry. Clear? See, always remember first you have to write the chemical equation or chemical reaction. First step आपका क्या होगा? You have to write the chemical reaction. Second step, balance the reaction. दूसरा स्टेप भी सिंपल ही है। क्लियर? पहला हमने केमिकल रिएक्शन लिख दिया, विल स्टडी अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमने पढ़ा, उससे हमने केमिकल रिएक्शन लिखा, देन बैलेंस द रिएक्शन। थर्ड, what is given and what is to be found out. बहुत ही सिंपल है। तीसरा क्या है? What is given and what is to be found out. So applying these 3 rules, or you can say the 3 steps, you will be able to solve all the stoichiometric problems. ठीक है? अब देखिए इसके अंदर there could be different relations. How? See, first there could be mass relationship. Mass relationship. Clear? If mass is given, you have to calculate the mass, or there could be mass volume relationship. Clear? Or it could be volume relationship, or it could be mole to mass relationship. Clear? Or mole to volume. There could be many relationships. Clear? So how we'll be dealing with this basic? This is the theory of the stoichiometry. Now we will be dealing with some of the questions. इनके हम questions करेंगे one by one. Clear? हमारे पास पहला क्वेश्चन है। We are having the first question. Calculate the volume of CO2. मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ। Calculate the volume of CO2 at STP. Clear? Evolved by strong heating of 20 gram of CaCO3. See, this is your question on the topic stoichiometry. So what does it state? Say, calculate the volume of CO2 at STP evolved by strong heating of 20 gram of calcium carbonate. Now we'll write the equation. Calcium carbonate की decomposition. Clear? Look over here. CaCO3 on heating gives CaO plus CO2. Now, first we have written the reaction. Now, the reaction is balanced. 1 atom of calcium, 1 atom of calcium. 3 atoms of oxygen, 2 plus 1, 3. Carbon is 1 carbon. It's balanced. Rule 2 or step 2, it's over. Now, what is to be found out? See, he's saying volume of CO2 by 20 gram of CaCO3. First, identify the relationship. It is mass to volume. Now, you can clearly, we'll take this value later on. First यहाँ पर देखिए, how much weight? 1 mole का weight कितना होता है? Calcium 40 plus 12 plus 48, that is 100 gram. 1 mole is 100 gram. Now 100 gram is giving 1 mole. 1 mole at STP, how much volume? That is 22.4 liter. So this is according to the reaction ATR. According to the reaction
100 gram of CaCO3 produces 1 mole of CO2, 1 mole of CO2, and 1 mole of CO2 at STP 22.4. This is the molar volume. Clear? So 100 gram की अगर 22.4 लीटर है तो 20 ग्राम की कितनी होगी? That will be x. If we cross multiply the things, that is 100x is equal to 20 into 22.4. That is x is equal to 20 into 22.4 divided by 100. 0 0 cancel, 2 5s are 5. How much? You can cancel it 22.4 by 5. You will get the answer. So again we have applied that 3 steps. One more numerical हम लेते हैं. See, now this was on mass volume relationship. ठीक है. Next हम देखते हैं calculate the mass of iron. Next हमारा है calculate the mass of iron. ध्यान से देखें, mass of iron, which will be converted into its oxide Fe3O4, into its oxide Fe3O4 by action of 18 gram of steam on it. आप सबको पता है, आपने क्लास 10th लेवल में पढ़ा होगा, आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है. आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम. क्लियर? सो अब इस रिएक्शन में अगर हम देखें आयरन, पहला रूल वही हम क्या अप्लाई करेंगे? विल राइट द केमिकल रिएक्शन. सो Fe plus H2O give rise to Fe3O4. ठीक है? क्लियर? Now if we balance, here it will be H2, here it will be 3, here it will be 4, 3 Fe, 4 to the 8, and here comes 4. It's balanced. You can see 3 atoms of iron, 3 atoms of iron, 4 oxygen, 4 oxygen, 4 to the 8, 4 to the 8. It's a balance. हमारे 2 steps हो गए. अब what is given, what is to be found out? See, clearly question क्या state कर रहा है? 18 gram of steam and mass of iron. So mass relationship is there. So we can have from here 3 into iron का mass कितना होता है? Atomic mass 56. 3 into 56 is reacting with 4 into 18. Clearly water का 18 होता है and 4 moles are there according to reaction. 3 into 56 gram is reacting with 4 into 18 gram. So 18 gram of steam will require how much weight of iron? So we can cross multiply the things. That is 4 into 18 into x is equal to 3 into 56 into 18. So that over here x is equal to 3 into 56 into 18 by 4 into 18. So 18 get cancelled. That is 4 1s are 4, 4 4s are 42 gram. See. Again we have applied the 3 steps. Only the 3 steps. Clear? चलो एक दो क्वेश्चन और लेते हैं. Clear? Then we'll proceed to our next topic. Very interesting. That is limiting reagent. हमारे पास next question है. How many moles of phosphine? See, how many moles of phosphine gas, PH3, poisonous gas, phosphine will be obtained by hydrolysis of 3 mole of calcium phosphide. See बच्चों, हम इसके अंदर भी सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे, वही हमारे 3 स्टेप्स. ठीक है ना? पहला स्टेप क्या आएगा? राइट द रिएक्शन. देखिए कैल्शियम फॉस्फाइड. अब वो क्या कह रहा है? कैल्शियम फॉस्फाइड की क्या हो रही है? हाइड्रोलिसिस इज वाटर के साथ रिएक्शन. सो इट विल फॉर्म CaOH twice plus PH3. एवोल्यूशन ऑफ फॉस्फीन गैस. पहला स्टेप लिख दिया. दूसरा स्टेप क्या है? बैलेंसिंग. कैल्शियम के कितने हैं यहाँ? 3. क्लियर? फॉस्फोरस 2. So just see how much it is. 2 3s are 6 and 3 to the 6 12. So 6. I think it's balanced. P2 Ca3 it's balanced. Now what he is saying,
mole to mole. Here the relationship is mole to mole. How many moles of phosphine will be obtained by 3 moles? See here, clearly the question is saying 1 mole of phosphine is giving 2 moles of 1 mole of calcium phosphide. 1 mole of calcium phosphide is giving 2 moles of phosphine. So if it is 3 moles are given, then how many? It's a simple math. 1 mole gives 2, 3 moles will give 6 moles. That's the answer. Again, the 3 steps. Clear? चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं अच्छा सा, then we'll proceed to our next topic. See, we are having a reaction 4HCl plus MnO2 give rise to MnCl2 plus Cl2 plus H2. First of all, a reaction is given, we have to see whether it's balanced or not. ठीक है? So MnCl2, Cl2, Cl2, okay. Mn, O2, O2. So now it's balanced. ठीक है? Now what they are asking, they are saying how many grams of HCl? 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 How many grams of HCl will react with 5 gram of MnO2? क्लियर? हमारा पहला स्टेप था रिएक्शन लिखना, वो तो दी थी, फिर हमने उसको बैलेंस किया. ओके, नाउ व्हाट ही इज आस्किंग, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl? ही इज आस्किंग हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl. व्हाट इज गिवन? 5 gram of MnO2. So the relationship is between mass to mass, and one more thing, relationship is between MnO2 and HCl. So we'll concentrate over here. See, according to reaction, 4 into what's the atomic molecular mass for this? 36.5 gram is reacting with how much? Mn is 55. 55 plus 32, 87 gram. So according to reaction, this much gram is reacting with this much. So 5 gram of MnO2 will require X. Just cross multiply, you will get the answer. Clear? So should I do 87x is equal to 5 into 4 into 36.5. So X is equal to 5 into 4 into 36.5 upon 87. So from here you will get the answer. Clear? Chalo, let's proceed to the next topic. Very interesting topic. स्कूल एग्जामिनेशन में जरूर इसका एक क्वेश्चन आता है, लिमिटिंग रिएजेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट. सी, लिमिटिंग रिएजेंट is the reagent or the reactant or the substrate which gets consumed during the reaction. During the reaction it get consumed. तो जो reactant consume हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? Limiting reagent. Again I am explaining to you, limiting reagent is the reagent or the reactant which gets completely exhausted during the reaction. खत्म हो जाता है. And one most important thing about it, ये वो reagent है जो आगे का product decide करता है कि आगे का product का amount क्या बनेगा, या it will decide how many moles will be formed of product. So limiting reagent, you can write down, limiting reagent decides the amount of product or moles of product. लिमिटिंग रेजेंट डिसाइड्स. क्लियर? अब इसको समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे आपको इस कंसेप्ट के बारे में पूरा पता चल जाएगा. लुक ओवर हियर. हमारे पास एक क्वेश्चन है, 3 ग्राम ऑफ H2 reacts with 29 gram of oxygen. Clear? 3 gram of H2 reacts with 29 gram of oxygen to form water. पहला हमारा क्वेश्चन है, which is a limiting reagent. Clear? हमारा दूसरा पार्ट है, how much H2O will be formed. कितना H2O will be formed. So that will depend on limiting reagent. Clear? एक और पार्ट, which reagent is in excess and how much, ये भी निकाल लो. ठीक है? देख लिया सबने क्वेश्चन.
3 gram of H2 reacts with 29 gram of oxygen to form water. Which is the limiting reagent? How much H2O will be formed? Which reagent is in excess and how much? चलो इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए सेम मैं वही स्टेप करूंगा. पहले मैं रिएक्शन लिखूंगा, उसको बैलेंस करूंगा. ठीक है. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं. और लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के मैं 2 वेज बताऊंगा आपको. जो भी आपको अच्छा लगे अप्लाई दैट. क्लियर? चलो. सो क्वेश्चंस हम रिमेंबर रखेंगे क्या क्या निकालना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द रिएक्शन. देखिए H2 plus O2 give rise to H2O. तो अगर मैं इसको बैलेंस करूं 2H2 plus O2 give rise to 2H2O. Is it balanced? 2 to the 4, 2 to the 4, 2 oxygen, 2 oxygen. It's balanced. Okay. Now, again according to the reaction, see H2 and O2 combine कर रहे हैं. We have to find out the limiting reagent. तो इन दोनों में से कोई एक लिमिटिंग रेजेंट होगा. और लिमिटिंग रेजेंट कौन होगा? जो लेस अमाउंट में होगा या एग्जॉस्ट हो चुका होगा. क्लियर? द रेजेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट व्हिच गेट्स एग्जॉस्टेड ड्यूरिंग द रिएक्शन. सो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन. H2 का कितना होता है? 2 into 2 4 ग्राम. 4 ग्राम इज रिएक्टिंग विद 32 ग्राम. Why 32? 1 मोल का वेट 32. 4 ग्राम रिएक्ट्स विद 32. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक का वेट ले लो. लेट्स सपोज 3. इसका वेट निकालेंगे. जो इसका वेट गिवन है, बट विल फाइंड आउट बाय टेकिंग द वेट ऑफ हाइड्रोजन कि हाउ मच इट नीड्स. इफ 4 ग्राम नीड्स 32, 3 ग्राम को कितना चाहिए. सो विल कैलकुलेट 4x क्रॉस मल्टीप्लाई करके, दैट इज 32 into 3. क्लियर? दैट इज हाउ मच? 32 into 3 by 4. 4 8s are 8 3s are 24. See, 24 gram is required. How much they have given? 29. So they have given in excess. So you can put this is excess. This is your limiting reagent. This is your limiting reagent. Again, I will explain. 4 gram reacts with 32. If 4 gram requires 32, so 1 gram requires 8. 3 gram requires 3 8s are 24. This is the requirement. But they have given 29. So they have given excess. How much? 5 gram. So हमारा थर्ड वाला यहीं सॉल्व हो गया. They have given 5 gram as excess. So H2 is the limiting reagent. Now अगर हमें ये समझ आ गया H2 limiting reagent है, तो H2 decide करेगा what is the amount of water formed. कैसे? Now the relationship between will be H2 and water as limiting reagent has been decided. So 4 gram gives 2 into 18. Yeah, because 2 moles are there, 2 into 18. 18 is the molar mass. So 3 gram will give x cross multiply. That is 2 into 18 into 3 by 4 is equal to x. Clear? 2 2s are 2, 9s are 9, 3s are 27. So this is the amount of water formed. तो हमारे पहले पार्ट का आंसर क्या हुआ? H2 is the limiting reagent. दूसरा 27 gram of water will be formed. Yeah. और तीसरा oxygen is in excess and how much? 5 gram. Yeah. चलो इसका एक वे और मैं बताता हूँ आपको लिमिटिंग रेजेंट का कैलकुलेट करना. हम क्या करेंगे, हमारे पास इसके कितने गिवन है? 2 मोल्स. इसके गिवन कितने हैं? 1 मोल. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ मोल्स कैलकुलेट कर लूंगा. देखिए मोल्स इज इक्वल टू हाइड्रोजन के कितने? 3 बाय मोलर मास H2 का 2. So that is comes out to be 1.5. Clear? Now oxygen, moles of oxygen, how much? 29 by 32. Something जो भी आएंगे 29 by 32. ये दोनों के moles आ गए. ठीक है. Now what we'll do? We'll divide the moles. We'll divide the moles by the actual moles. फिर देखेंगे कौन less amount में. देखो here it is 1.5 divided by 2. Clear? And here it is 29 by 32. How much? 1. Okay. So given moles by the actual moles reacting in the reaction. तो अगर हम इसमें देखें which will be less, I think it will be this 0.75. Yeah, 0.75. So H2 is the limiting reagent. So you can calculate by this method also. If moles are given, divide by the actual moles reacting. So which is present in less, the lesser number of moles will be your limiting reagent because it will get exhausted. Yeah. So this was
about stoichiometry and limiting reagents, do lots of problem by following these rules. Thanks.